So what we'll do, we'll divide this into two parts. Say a Laurent series expansion, how to assess singularity and how to just write a representation. How to just write a representation. Although they are the same thing, write a representation. So let's say if I have to see what is the nature of the singularity, let's say we'll do the question all over again. So if I'm saying, so that it does not create a confusion here. So see, I'm restarting it all over again. See, what I told you yesterday, that if I'm writing a Laurent series representation, so if I'm writing a Laurent series representation, what do I need? I need that if my function, if my if my function is singular at point z equal to z naught. Okay, if my function is singular at z equal to z naught, I cannot write a Taylor series about it. So I will write a Laurent series about it. Fine. And the number of principal part terms would give me an idea about what sort of isolated singularity I have. See, if there are infinite terms, then there would be essential singularities and all those things. Okay, so what I would do is I would break down the lecture into two. That is how to assess the singularity and how to just write a representation. Okay, so that will help you out. So for example, the question was fz is equal to 1 upon z plus 1 into z plus 3. Okay, if I have to assess the nature of singularity about z equal to minus 3 or z equal to plus 1, what I would do is I will have to say that z plus 3 is u, and I have to write it in some भैया हाँ बेटा बोलो. भैया हाँ बोलो. आवाज आ रही है नहीं आ रही? क्या अब हो आ गया? रही है अब आ रही है ना? स्क्रीन वो हाँ स्क्रीन में नहीं दिख रही है अभी तो इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम हो गई है स्क्रीन नहीं दिख रही क्या? हाँ नहीं दिख रही अब क्लियर हो गई पहले आवाज भी नहीं आ रही थी वापस बोलना पड़ेगा ठीक है. देखो एक्चुअली देयर वाज अ कंफ्यूजन ना, तो उसको मैं क्लियर कर रहा हूँ. देखो देयर वुड बी लॉरेंट सीरीज. फाइन. लॉरेंट सीरीज हमने पढ़ ली. ठीक है. और मेरी गलती यार, मैं उस समय कुछ आई वाज लॉस्ट समवेयर. सो लॉरेंट सीरीज रिप्रेजेंटेशन वुड गिव मी टू आइडियाज. वन, see, if my function is singular at z equal to z naught, I can no longer expand my function in form of a Taylor series. Yes or no? ठीक है. I cannot expand my function in the form of Taylor series. So I am left out with something called as Laurent series. Now, what Laurent series would give me? Laurent series would give me a regular part. And it will also give me a part which is singular. And this is something called as principal part. So if I have some number of terms in principal part, let's say if I have some terms in the principal part, let's say if I have infinite number of terms in principal part, then I have an essential singularity. If I have some finite number of terms, then I have poles of some order, and likely. So how to assess singularity? What you will do, you will simply write fz is equal to 1 upon z plus 1 into z plus 3. You simply write z plus 3 is u, and you just try to expand it in the way I taught you. So what you'll do, you'll simply take the 1 upon u as common out, and then you'll take you take again u common out, so you'll get 1 upon 2 minus u raised to power minus 1. Okay, are you getting my point? ये चीज समझ में आ रही है, ऊपर से आ रही है? हाँ कैसा है बच्चे? ओके. और अदरवाइज सी, अगेन आई डू इट. तो मैं पार्शियल फ्रैक्शन से समझाऊं. देखो, लेट्स से दिस इज योर फंक्शन. So let's say this is your function. Okay, so what you do, you simply write it in this way. Okay, so you just write it in this way. So what I would do, I would just take u minus 2, or sorry, u minus 2 divided by u minus 2, and here you'll have 2. So u gets cancelled with u, so you will have 2 and u here, and you have 1 upon u minus 2. Is it? Any issues about it? No, भैया. Okay, till now there are no issues. So what you would do is you will simply take, I think from here you just try to take something common out, because see, this series represent, if I just write 2 upon u here, और यहाँ पे काम करते हैं, you just try, there will be two possibilities. जो भरत कह रहा है, there will be two possibilities. Try to see what possibility will yield you will yield you
annular region. So let's say if I just take 2 common out from here, if I just try to take 2 common out from here, so what we'll get, you will simply get u by 2 and you will get a -1 here and 2 comes out, so 2 gets cancelled with 2. Okay, and eventually you're left with 1 upon u, and then you are left with 1 minus u by 2 and raised to power -1. Okay, so now if you try to write a representation of in this fashion, what you'll get, one thing, that is you'll get 1 upon u, and then you will get 1 plus u by 2 plus u square by 4, and then you will get, I think, plus u cube by 8, I think, and all those terms. So you are left with 1 upon u, and then there will be some terms which are regular. Okay, and 1 upon u means what? It means 1 upon z plus 3. So you'll have some terms, I'm not interested there, in z plus 3 raised to power n. This will form your regular part. This will form your singular part. Okay, and if it is a singular part, how many number of terms are there? So number of terms are z equal to -3. So number of terms are single, that is 1. So you will say that I have a simple pole at z equal to -3. Yes or no? And what would you say? You would say that this particular series would be convergent only if mod u by 2 is less than 1. Because here I've expanded my sort of series with help of a binomial series representation. So that gives me mod of u less than 2, that mod of u less than 2, and eventually I would write mod z by 3 less than 2, and u not equal to 0. So u not equal to 0 matlab you'll have a puncture at z equal to 0, and you will have to say me like this. Again, this is a problem. It will be z plus 3. Sorry. What to do? एक काम करते हैं, इसको बाहर में एक और बना देते हैं. ये लो. This is your origin, let's say. And let's say this is your not origin. Origin अगर यहाँ है तो इसको शिफ्ट करना पड़ेगा. रुक जाओ. इसको शिफ्ट करना पड़ेगा तो. Okay. I think this would be it. So for example, if this is your origin, this is your origin. So if this is your origin, and this is your z minus 3. Are you getting my point? This is your z minus 3. So z minus 3 ke about you made a circle of radius 2, and you are not including z equal to -3 here. You're not including z equal to -3. So this is your representation. Okay. So in any case, the singularity must come in the should not be contained, but एक एनुअल रीजन होना चाहिए जो सिंगुलैरिटी के अबाउट हो. सिंगुलैरिटी के अबाउट समझते हो? मतलब दिस इज z इक्वल टू -3 या सिंगुलैरिटी है, तो आप क्या कर रहे हो? z इक्वल टू -3 के अबाउट एक्सपेंशन दे रहे हो. z इक्वल टू -3 के अबाउट एक्सपेंशन देने का मतलब यू आर इन द नेबरहुड ऑफ z इक्वल टू -3. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नेबरहुड मतलब एक ओपन डिस्क होनी चाहिए, एक ओपन डिस्क होनी चाहिए जिसके अंदर z इक्वल टू -3 है, बट z इक्वल टू -3 इज नॉट इन द इवैल्यूएशन. बात समझ में आई कि ऊपर से चली गई? देखो z इक्वल टू -3 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर z इक्वल टू -3 हुआ तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, और हम साफ कह रहे हैं कि mod z plus 3 शुड बी ग्रेटर देन 0 and less than 2. So this is a problem. So you should be in an open disk. Okay, you should be in open disk such that z equal to -3 is not contained in that disk. मतलब एक नेबरहुड बननी चाहिए z equal to -3 की, जहां पर z equal to -3 खुद ना हो. So you should be in a deleted neighborhood of z equal to -3. Are you getting my point till now? ये चीज समझ में आई कि नहीं, कि ऊपर से चली गई? आई हाउ आई एम एबल टू कन्वे. देखो, अगर तुम्हें नेचर ऑफ सिंगुलैरिटी असेस करनी है, देखो नेचर ऑफ सिंगुलैरिटी असेस करनी है, तो तरीका क्या होगा? लेट्स से z इक्वल टू -3 तुम्हारा सिंगुलैरिटी है, ठीक है? तुम क्या करोगे? व्हाट यू डू इज सिंपल z प्लस 3 को u ले लो एक बार, और इस तरीके से पूरी जो सीरीज आएगी वो z प्लस 3 के फॉर्म में आएगी. अब जो कंफ्यूजन है वो मेन बता रहा हूँ. कंफ्यूजन यहाँ पर ये है कि यहाँ पे आई हैव टेकन टू कॉमन आउट. अगर मैंने यहाँ u कॉमन आउट ले लिया होता, इफ आई हैड टेकन u कॉमन आउट, तो तुम्हें चीज मिल जाती 1 minus 2 by u, and then there would be infinite number of terms in 1 over 1. That would lead to a very big confusion. The answer to that confusion is, if I'm interested in finding the singularity at z equal to -3, I would write a Laurent series expansion in an annular region. That is absolutely fine. But
about z equal to -3. That is, at z equal to -3, I'm supposed to create an annular region. Only then this kind of assessment will give me the nature of singularity. See, if I would have taken u common naught from here, you would find that there are infinite number of terms. अगर u common ले लोगे ना तुम यहाँ से 1 minus 2 by u करोगे, then it would give me infinite number of terms, and that region would yield me that mod u should be greater than 2. Okay, mod u greater than 2 means z plus 3 का mod is greater than 2. Now z plus 3 का mod greater than 2 does not make a neighborhood about z equal to -3. See, z plus 3 का mod greater than 2 means what? Z plus 3 का mod greater than 2 means what? I am about this circle, but I am away from it. So I'm not writing a representation about point z equal to -3. When I mean that I have to write my representation about point z equal to -3, it requires me to write a representation in the deleted neighborhood of z equal to -3. I hope now I'm making some sense, but is it not making any sense to anyone? I just want to remove that confusion. भरत समझ में आ रहा है, ऊपर से जा रहा है? यस सर। और सर दूसरे वाले केस में जब z+3 ग्रेटर देन 2 में, उसमें हमारा फिर वो वाला लेस देन इन्फिनिटी वाला एनुअल रीजन वाला कॉन्सेप्ट वो तो नहीं रह गई। लगेगा? देख, एनुलर रीजन तो रह गई, दैट वुड रिमेन। एनुलर रीजन है वो। मैं बैठ की मैं पहले भूल गया पार्ट में। एक्चुअली होता क्या है, आई हैव ऑलवेज टॉट कि मैं हमेशा मानता हूँ कि क्वेश्चंस आर नेवर सिली, आंसर्स मे बी, बिकॉज सी क्वेश्चन एकदम पड़ता है आपके सर पे, यू जस्ट ट्राई टू इवेड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, यू जस्ट ट्राई टू इवेड इट, बट इवेंचुअली मेरे साथ तो ये दिक्कत है कि इवेंचुअली वो अगले सेंटेंस में आ जाता है। सो बीइंग अ मैथमेटिशियन आई कैन नॉट कॉन्ट्रडिक्ट माय ओन स्टेटमेंट्स। So if I'm saying less than infinity, in that sense also it is an annular region. I'll come up on that. Don't worry. So I've started a sort of redoing it. So just try to बट understand. इसमें हाँ बोलो। सर ये लेस देन इन्फिनिटी वाले में हमारा जो -3 है सिंगुलैरिटी, वो तो नहीं आ रही रीजन में जो आपने अभी बताया उसके हिसाब से? हाँ एग्जैक्टली, वहां -3 जब सिंगुलैरिटी नहीं आ रही, तो इस सीरीज रिप्रेजेंटेशन से तुम कभी भी z इक्वल टू -3 पे क्या नेचर ऑफ सिंगुलैरिटी इसको नहीं पता कर पाओगे। ओके Although, ओके सर। since it is an annular region, the series representation would, in that sense, called as a Laurent series movie. ये चीज समझ पा रहे हो बट मेरी इट बात? देखो ओके हो क्या सर रहा है, ओके। क्वेश्चन ये है, हमको ये पता करना है कि z इक्वल टू -3 पे कैसी सिंगुलैरिटी, राइट? तो मेरी z जी इक्वल टू सर। -3 के नेबरहुड में मुझे ढूंढना पड़ेगा। आर यू जी गेटिंग सर माय पॉइंट? समझ। सो हम लोग कहते हैं ना अबाउट z इक्वल टू -3, कहते हैं ना कि जैसे फाइंड द लोरेंट सीरीज अबाउट z इक्वल टू -3, दैट इंप्लाइज अबाउट मींस -3 को भूल जाओ, उसके नेबरहुड में चले जाओ। अब उसके नेबरहुड में कहीं पर भी जाओगे तो z इक्वल टू -3 तो कंटेन नहीं है। लेट्स से आई एम सेइंग z प्लस 3 का मॉड लेस देन 10 और ग्रेटर देन 0, ये हो गया डिलीटेड नेबरहुड। अब यहाँ z इक्वल टू -3 नहीं ले सकते, और लेस देन 10 का मतलब क्या हो गया, यू आर इन सम नेबरहुड ऑफ z इक्वल टू -3, एंड दैट नेबरहुड इज एन डिलीटेड नेबरहुड। डिलीटेड नेबरहुड समझते हो, मतलब जहाँ पे z इक्वल टू -3 हटा दिया गया। इवेंचुअली व्हाट यू आर फाइंडिंग इज कि z इक्वल टू -3 हटा दिया, और इसके पास आप एक रीजन बना रहे हो, और वहां पे एक एनुलर रीजन, सो इट इज आल्सो एन एनुलर रीजन, बट हियर योर सिंगुलैरिटी इज सॉर्ट ऑफ कंटेन्ड हियर, और यू कैन से दैट यू आर अबाउट z इक्वल टू -3। प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है, यहाँ इफ आई जस्ट टेक, आई थिंक if I take sorry, u common out, if I take u common, I'll do that also, but if I take u common out, then binomial series would require me to say that mod u should be greater than 2, and here I'm nowhere close to -3, so I'm not writing a Laurent series about z equal to -3. So there are two cases right now, I have made them up. So if you have to assess the singularity, this will be the scheme of things that I have written. Okay, ये स्कीम रहेगी। यहां तक समझ में आया? किसी को कंफ्यूजन हो भी प्लीज पूछ लो, बिकॉज ये सही डाउट रेज किया गया है। दैट इज आई एम सेइंग दिस इज अ राइटफुल डाउट, बिकॉज ये कंफ्यूजन होगा एग्जाम के। किसी को कंफ्यूजन है प्लीज पूछ लो, अल्पना को, मोनिका को, वापस बोल दूंगा, आई एम गोइंग टू रिपीट इट ऑल ओवर अगेन, लेकिन मुझे एक बार बता दो। एक बार वापस से रिपीट कर दो भैया। ठीक है, देखो क्वेश्चन जो भरत रेज कर रहा है, और अदरवाइज भी समझो, लोरेंट सीरीज रिप्रेजेंटेशन जो है, आप ऐसे समझो, देयर वुड बी टू कैटेगरीज ऑफ डूइंग अ प्रॉब्लम, ऐसा समझो। ओके, वन वुड बी टू असेस द नेचर ऑफ सिंगुलैरिटी, कि आप असेस कैसे करोगे सिंगुलैरिटी को, तो उसके लिए आपको लोरेंट सीरीज रिप्रेजेंटेशन लिखना होगा, एंड बाय फाइंडिंग कितने नंबर ऑफ टर्म्स है प्रिंसिपल पार्ट में, यू विल बी एबल टू असेस कि सिंगुलैरिटी एसेंशियल है, कि सिंगुलैरिटी सिंपल पोल है, या so on and so forth.
ओके, ये चीज हम कल कर चुके हैं. सो लेट्स से द फंक्शन इज एफ जेड इज इक्वल टू जेड प्लस वन इंटू जेड प्लस थ्री. जेड प्लस थ्री को आपने यू लिख दिया, जेड प्लस वन को आप लिख रहे हैं यू माइनस टू, और यहाँ पर आई हैव जस्ट ट्राई टू राइट, क्या कह सकते हैं इसको, partial fraction form में 2 upon u 1 upon u minus 2. Now what Bharat says and what is the main confusion is कि यहाँ पे दो possibilities हैं. Either you can expand, either you can take u common out, or either you can take 2 common out. Okay. So what I did, I took 2 common out. Okay. So when I took 2 common out, what I'm getting is I'm getting a regular part and then I'm getting 1 upon u. So I will say that if I take 2 common out, I'm finding only one part in this principal part, and which suggests me that u equal to 0 and which eventually would mean z equal to 3 is a simple pole. Fine. I don't think यहाँ तक किसी को परेशानी है. देखो ये चीज तो कर लोगे ना. I think this is absolutely हाँ fine. जी ये भैया यहाँ पर यहाँ तक हो हाँ गया. जी. अब प्रॉब्लम या कंफ्यूजन का सोर्स क्या है? If somebody takes u common out, then what is the problem? So first that I would do in a later segment, but try to understand one point. अगर तुम्हें कोई एग्जाम में कहे you have to find the nature of the singularity, what you would do, you would try to, I'll write it here, try to expand Laurent series about singularity. By about singularity I mean, आप क्या करेंगे, आप z equal to z naught, let's say ये रहा, इस पॉइंट पर है, you will try to create a neighborhood about z equal to z naught, and in that neighborhood you want to write the expression. So let us come back to the problem. ये वाली जो प्रॉब्लम अभी हम कर रहे थे, in this problem just try to understand, ये जो representation है ना बेटा, ये representation जो मैं अभी लिख रहा हूँ, this representation इसकी वैलिडिटी क्या है? इसकी वैलिडिटी देखो थोड़ा ध्यान से. इफ यू क्लियरली सी दैट दिस पर्टिकुलर थिंग विल बी वैलिड ओनली इफ यू इज नॉन जीरो, एंड दिस पर्टिकुलर हाँ जी. थिंग को मैं बाइनोमियल सीरीज में कब लिख सकता हूँ? ओनली इफ मॉड ऑफ u बाय 2 इज लेस देन 1. ठीक है, ये वाली चीज कभी बाइनोमियल लिखी जा सकती है देन मॉड ऑफ u बाय 2 इज लेस देन 1. ठीक है, सो इसका मतलब ये हुआ कि मॉड ऑफ u लेस देन 2 मतलब क्या हो गया? मॉड ऑफ u, सॉरी, मॉड ऑफ u बाय 2 लेस देन 1 मतलब मॉड ऑफ u लेस देन 2, एंड u इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब u अगर नॉन जीरो है तो उसका मॉड हमेशा पॉजिटिव ही आता है. आई विल राइट मॉड ऑफ u. इसका मतलब आई एम इन अ रीजन which is like this. Fine. So I am in a region where z equal to -3 दिख रहा है. मैं इसके अबाउट एक रीजन बना रहा हूँ जिसका रेडियस कितना दे रखा है? 2, और जीरो से अधिक मतलब समझ रहे हो? मतलब जीरो नहीं हो सकता. जीरो नहीं हो सकता मतलब आई विल नेवर बी ऑन z equal to -3, क्योंकि अगर z equal to -3 यहाँ रख दिया तो जीरो आ जाएगा. आई एम सेइंग इट शुड बी ग्रेटर देन जीरो. So I am in a region mod z by 3 greater than 0 and mod z by 3 less than 2. मतलब I am in a circle of radius 2 about point z equal to -3. About point z equal to -3. Are you getting my point? So if I have to हाँ write a जी. Laurent series in order to assess the singularity, I have to be about z equal to z naught. Means I have to be in certain neighborhood of z equal to z naught such that z naught is not contained. So I'll obviously be in an annular region. क्योंकि अगर z naught contained नहीं है, इसको छोड़ दो, तो समझो जैसे एक पेपर लिया और यहाँ पे पंक्चर कर दिया, तो ये तो नहीं है, और आप नेबरहुड के अंदर हैं, तो लेट्स से मैं कह रहा हूँ z naught की नेबरहुड 2 रेडियस की है, तो एक तो यहाँ से होल है और एक ही है, तो बेसिकली आप क्या, एक एनुलर रीजन भी तो आ गए. हो गया Now भैया question जी. arises, can we not write series representation in different other annular regions? The answer to this problem is yes, we can write it, but we'll not be able to assess the nature of singularities there. Say, for example, if I'm writing this particular expression, let's say fz upon z plus 3 into z plus 1. Okay. So this is the second part of what confusion led us to. So, okay, how to write a representation. So this is another case that I'm doing. How to assess singularity. I hope I made some sense to you. Bharat, is it clear to you? यस सर. और सर जो दूसरा केस है जो अभी आप बताएंगे, उसमें हम, आप बोल रहे हो नेचर ऑफ सिंगुलैरिटी हम बता नहीं सकते, बट उसमें हम बता सकते हैं ना कि वो एसेंशियल सिंगुलैरिटी है. वो नेचर में नहीं आता क्या? नहीं, वहां नहीं बता पाओगे. देखो सी, आंखों के सामने दिख रहा है, इट इज नॉट एन एसेंशियल सिंगुलैरिटी. आंखों के सामने दिख रहा है z equal to -3 is not an essential singularity. How would I say? See, in order to assess that what is a singularity, I have to write a power series or Laurent series about that point.
राइट अबाउट राइट। दैट पॉइंट। ठीक है, अभी देखो लेट अस सी, पहले एक देखो इसमें क्या क्या एनुलर रीजन हो सकते हैं। एक तो ये एनुलर रीजन हो गया, दूसरा एनुलर रीजन क्या हो सकता है, मॉड जेड ग्रेटर देन 3। मतलब क्या हो गया, एक तरीके से मॉड जेड ग्रेटर देन 3 बस लेस देन इन्फिनिटी। एक एनुलर रीजन क्या हो जाएगा बताओ, मॉड जेड ग्रेटर देन 1। मानते हो, ये भी एक तरह का एनुलर रीजन हो गया। और एक एनुलर रीजन नहीं हुआ उसको आप क्या कह सकते हो, सिंपली मॉड जेड लेस देन 1 और मॉड जेड लेस देन 3। हालांकि उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वहां तो सिंपली टेलर सीरीज ही हो जाएगी। So if I write let's say mod z less than 3 or mod z less than 1, this will actually be nothing but Taylor series, because mod z less than 1 क्या प्रॉब्लम है इसको, ये तो एक तरीके का नॉन एनुलर रीजन ही हो गया ना। तो लेट अस सी कि इन चारों रीजन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है रिप्रेजेंटेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट टिल नाउ? मैं जो समझा रहा हूँ कुछ समझ में आ रहा है, ऊपर से जा रहा है? बिकॉज दिस इज यस अ सर। गुड क्वेश्चन, बिकॉज अदरवाइज कंफ्यूजन विल स्टार्ट। ठीक है, ओके ओके। So let me again try to write all these things for you. So let's say अगर मैं कह रहा हूँ पहला रीजन that is mod z greater than 1 and less than 3, mod z greater than 1 and less than 3, तो क्या करेंगे, देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो। इफ आई एम सेइंग mod z should be less than 3 and greater than 1, ठीक है, मतलब तुम किस रीजन हो पहले वो स्केच कर लेते हैं। तो देखो तुम इस रीजन में, यू आर इन दिस रीजन। So mod z is greater than less than 3 but greater than 1. So here it is 1 and here it is 3. दिस इज योर 3 एंड दिस इज योर 1। ठीक है, तो तुम इस रीजन में, पहली चीज समझ में आ गई। सो दिस इज एन एनुलर रीजन, कोई दिक्कत नहीं है। सो यहाँ पे मैं लोरेंट सीरीज लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ, क्यों नहीं लिख सकता हूँ। लेट अस सी हाउ। सो मॉड जेड ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 3 कैसे करें। सो व्हाट आई वुड डू इज, देखो बहुत सिंपल सी ट्रिक है। ये सोचो कि मॉड जेड लेस देन 3 कैसे लिख पाते हैं, तभी तो लिख पाते हैं जब तुम ऐसा कुछ कर रहे हो। देखो पहले तो इसको ऐसे कर दो, एक हाफ कॉमन आउट ले लो, फाइन। अब थोड़ा ध्यान से देखते हैं सीरीज को। इधर से मॉड जेड लेस देन 3 कब ले पाते हैं, मॉड जेड लेस देन 3 तब ले पाते हैं जब ऐसा कुछ हो रहा होता है। ऐसा कब होगा, जब यहां से 3 कॉमन आउट, जब 3 कॉमन आउट लोगे तो इस तरीके से कुछ होगा। और यहां से मॉड जेड ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या हुआ, मॉड जेड ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या हुआ। हमेशा याद रखो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस व्हेनेवर वी आर राइटिंग, वी राइटिंग मॉड जेड लेस देन सम आर। बट यहाँ ग्रेटर देन आर आ रहा है, इसका मतलब सम ऐसा कुछ रहा होगा, तभी मॉड जेड ग्रेटर देन 1 आया होगा। ओके, सो व्हाट यू विल डू, टेक जेड कॉमन आउट, दिस इज फाइन। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर, यू सी यहां पर आपकी सिंगुलैरिटी कहाँ लाई कर रही है, द सिंगुलैरिटी इज लाइंग ऑन द सर्कल। देखो z इक्वल टू -3, ये जो सर्कल है ना, इस पे लाई कर रहा है। यू आर नॉट राइटिंग एनी सीरीज रिप्रेजेंटेशन अबाउट z इक्वल टू -3, रादर you are writing a series representation in some annular region. This is your annular region. ठीक है, तो यू आर नॉट राइटिंग अ सीरीज रिप्रेजेंटेशन about your z equal to -3, isn't it? So you're not writing a series representation about z equal to -3, or so let's say whatever is the point. So if I'm not wrong, इसको इधर से इधर ले जाते हैं, बार बार गलती होती है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? तो if I'm not writing a series representation about a point z equal to -3, so if I have to write a series representation about a point z equal to -3, only then I will be able to assess the nature of singularity. इज इट क्लियर टू यू? बात समझ में आई, ऊपर से चलेगी? अल्पना को समझ में आ रही है कि सब ऊपर से जा रहा हो? देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो। लोरेंट आ रहा सीरीज, है। हाँ लोरेंट सीरीज क्या, क्योंकि एक्चुअली मैंने कंफ्यूजन स्टार्ट किया ना, तो मुझे एंड करना पड़ेगा। आई एम सेइंग कि देखो लोरेंट सीरीज का मतलब क्या है, यू वुड रिक्वायर एन एनुलर रीजन, नो इश्यूज अबाउट इट। So this is an annular region. I don't think there is a problem with this. So this is an annular region where I'm writing this series representation. दिख रहा है ये series representation? बट क्या इस रिप्रेजेंटेशन से आप नेचर ऑफ सिंगुलैरिटी असेस कर पाओगे? आई थिंक नो, बिकॉज फॉर नोइंग की सीरीज किस टाइप की, आई शुड बी एबल टू राइट माई सीरीज अबाउट z इक्वल टू -3। ठीक है, मतलब मेरे पास टर्म किसमें होना चाहिए, z+3 में टर्म्स होने चाहिए। ये सीरीज मुझे कभी भी नहीं देगी मौका, देखो यहाँ पर इट विल नेवर गिव मी अ चांस। Also that even if I write, I have to see कि मैं किस जगह पे हूँ। If I am about z equal to -3, if I am writing some deleted neighborhood of z equal to -3, only then that Laurent series will lead me to assessing the nature of the singularity. ये बात समझ में आई कि नहीं? This is the confusion. This is what I'm clearing.
ठीक है. So for example, if I have to write this representation, this will give me 1 upon 2, and then you will have 1 upon z, then you will have 1 minus 1 by z plus 1 by z square, or so on and so forth, and you will have minus 1 by 3, 1 minus z by 3 plus z square by 9, so on and so forth. So this will give me a Laurent series in this particular region. So you can clearly see that there are no terms of z equal to minus 3 here. So how would I assess singularity? Okay. In order to assess the singularity, I have to make a Laurent series about z equal to minus 3. And also that it should be an open disk containing deleting minus 3. So basically z equal to minus 3 छोड़ के एक neighborhood बनानी पड़ेगी. That is, I have to be about z equal to minus 3. Now I hope it is clear. Yes or no? Now how to write a series for this? Mod z greater than 3. So mod z greater, हाँ जी समझ में आया, ऊपर से चला गया. mod z greater than 3 का मतलब क्या हुआ? देखो mod z greater than 3 का मतलब क्या हुआ, इस तरीके से कुछ हुआ. So mod z greater than 3 means you are writing, you have to take mod z greater than 3 मतलब mod z greater than 1 अपने आप हुआ. इसका मतलब जो फर्स्ट टर्म है उससे आप z कॉमन आउट ले लेंगे, एंड दैट दिस विल गिव यू 1 प्लस 1 by z raised to power minus 1 minus 1 upon, I think z कॉमन आउट यहाँ पे भी ले लेंगे, 1 plus 3 by z. Now this series representation would be valid for the region mod 1 upon z mod less than 1 and 3 upon mod z less than 1, right? इस तरीके से कुछ होगा. And this would give you that this series, इसको खोल लोगे ना, इसको binomial series में expand कर लेना, but let us reconnect it. इसका मतलब ये क्या चाहेगा? In order to write this particular thing in binomial series, mod z should be greater than 3, and in order to write this particular term in binomial series, mod z should be greater than 1. Both means mod z should be greater than 3. ये कह रहा है mod z greater than 3, ये कह रहा है mod z greater than 1. इन दोनों का मिला के आंसर क्या हो जाएगा? एक कॉमन रीजन mod z greater than 3 पे you can write your function that is 1 upon z plus 1 into 3 plus z in a series representation इस तरीके से. So this will be 1 upon 2. You will get 1 upon z, and then you will get 1 minus 1 upon z, then you will get 1 upon z square, and so on and so forth. And here you will get minus 1 upon z, and here you will have 1 plus 1 minus 3 upon z, or plus 9 upon z square, so on and so forth. Again, you can see this is not about z equal to minus 3. Okay, it is not about z equal to minus 3. So it is having some terms. There are infinite number of terms at z equal to 0. But z equal to 0 is not a singularity. You can clearly see it is not a singularity. Why you are going to assess a singularity from z equal to 3 is not a singularity. Are you getting my point till now? I hope I am able to convince you. ये चीज समझ में आ पा रही है, नहीं आ पा रही? What about mod z less than 1? Mod z less than 1, absolutely no issues. This will be simply nothing but Taylor series. Because mod z less than 1 is what? Mod z less than 1 is simply you are in a region. You are not in an annular region now. If I would have written mod z greater than 0 and less than 1, then I would have been in annual region. Now this is a completely a region where a function fz is equal to 1 upon z plus 1 into z plus 3 is completely valid. Here, for mod z less than 1, there is no issues with this particular function. What is an issue? There is no issue. There is no singularity as such. So whether you write a Laurent series here or whether you write a Taylor series here, it is one and the same thing. But only point is, if I'm saying mod z less than 1, that would require me to write in this fashion. Mod z less than 1 मतलब क्या होगा? What you have to take common out here? You don't have to take anything common out here. You don't have to take anything common out here. In this case, what you are supposed to do, you are just supposed to write 1 plus z raised to power minus 1, जो आगे वाला टर्म है. और clearly this particular term की जो binomial series है वो valid होगी mod z less than 1 के लिए. खत्म काम. Yes or no? And the remaining term is, just don't disturb it. पढ़ रहने दो इसको. क्या ही फर्क पड़ रहा है? Because now you are writing your series for mod z less than 1. Okay, mod z less than 1. So mod z less than 1, this term will remain जैसा के जैसा, and this term you can expand. So this term you can expand 1 minus z plus z square
minus z cube, so on and so forth, divided by 2 minus 1 upon 2 z plus 3. Okay, and clearly this is a Taylor series representation, because now you are writing one in non-annular region. Second, you are not encountering any sort of singularity. मैं समझा पा रहा हूँ? Am I able to make you clear this thing? ये चीज समझ में आई कि ऊपर से चली गई है? कौन कौन रह गया यार? कौन कौन गया? भरत को समझ में आ रहा है? कहाँ चला गया भरत? आवाज क्यों नहीं रही? यस सर, मुझे सर एक दो क्वेश्चन है। पूछो पूछो। सर एक तो जो हमने ये सीरीज लिखी मॉड जेड ग्रेटर देन 3 के लिए, हम्म। इसमें हमें कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन तो मिल नहीं रही है, क्योंकि आपने कुछ बताया मीनिंगफुल कि हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। नहीं मिल रही सर। और दूसरा सर, मेरे को ये डाउट है कि एक बार ये डायग्राम में प्रॉब्लम हो रही है, कभी हम ओरिजिन के अराउंड ड्रॉ कर रहे हैं, कभी हम उस सिंगुलैरिटी के अराउंड ड्रॉ कर रहे हैं, ये जो देख, रीजन हम डिफाइन कर रहे ठीक है, जैसे अभी ये वाला रीजन था मॉड जेड लेस देन 3 ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये रीजन। अब इस रीजन का मतलब ये हुआ z माइनस 0 का डिफरेंस लेस देन 3 हो और ग्रेटर देन 1। ठीक है, इसका मतलब आप ओरिजिन पे हो, आप कह रहे हैं कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर बताइए, टेल मी ऑल दोस कॉम्प्लेक्स नंबर्स हुज डिस्टेंस फ्रॉम 0। आप ये कह रहे हैं मुझे वो कॉम्प्लेक्स नंबर बताइए जिसकी दूरी 0 से किससे छोटी हो? 3 से छोटी। मैं कह रहा हूं चलो एक 3 का रेडियस बना। ओके, सो दिस इज द रेडियस ऑफ 3 एंड यू आर सेइंग एक से ज्यादा हो, डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम 0 शुड बी ग्रेटर देन 1। ये दिख रहा है, ये साइन ग्रेटर देन 1, एक सर्कल बना है ग्रेटर देन। So you are telling me कि try to make a circle, या try to find me all those complex numbers whose distance from 0, that is the origin, is less than 3 and greater than 1. So basically you are trying to tell me this is the region. So ये वाली बात होगी। इस वाले रीजन के अंदर क्लियरली दिख रहा है कि यू आर एक्सपेंडिंग अबाउट z इक्वल टू 0, नॉट एक्सपेंडिंग अबाउट z इक्वल टू -3। Is it clear? हैं। राइट। So यस therefore, सर। in your terms, it will not yield me any meaningful information. It is just a way that I'm trying to say, ki, can I not expand my function in any sort of annual region? Yes, I can do so, but I'm not expanding about the singularity. If I'll expand about singularity, only then I will be able to make some sense about the nature of the singularity. So this was the primary first doubt. Okay, now secondly, another region. Let's say if I'm saying this is the region, so let's say if I'm saying this is the region, z plus 3 का mod less than 2 and greater than 0। पहली बात समझो, कभी भी मैं ऐसा लिखता हूं ना, mod z minus z naught greater than 0, it implies I'm referring to, or या फिर greater than 0 and less than something, let's say del, I'm referring to a deleted neighborhood of z equal to 0, z equal to deleted neighborhood of z इक्वल टू जेड नॉट। इसका मतलब क्या हुआ? डिलीटेड नेबरहुड का मतलब ये है कि आप जेड नॉट पर हैं, जेड नॉट के अबाउट एक नेबरहुड में है जहां पे जेड नॉट खुद कंटेंट नहीं। बिकॉज ग्रेटर देन 0 लिखने का मतलब ये हो जाता है कि आप जेड नॉट से किसी दूरी पर है। कितनी दूरी पे? कुछ पॉजिटिव दूरी पे। जेड नॉट और जेड के बीच का डिस्टेंस 0 से अधिक है। मतलब समझ पा रहे हो? इसको हमेशा डिस्टेंस की तरह भी समझा करो। तो z माइनस जेड नॉट का डिस्टेंस इज ग्रेटर देन 0, मतलब यू आर टॉकिंग ऑफ ऑल दोस कॉम्प्लेक्स नंबर्स whose distance from z naught is greater than 0. That is, you are away from z naught. You cannot be at exactly z naught, because at exact z naught this would become 0. So in mathematical terminology, we usually say this as deleted neighborhood of z equal to z naught. That is, you are in the neighborhood of z naught but not including z. So basically इस तरीके की representation को भी तुम annular ही बोलोगे, क्योंकि देखो यहाँ पर ये कंटेंट नहीं है। So there is a sort of puncture here. तो इसका मतलब बाकी सारे रीजन में हो तुम, यू आर इन ऑल दोज रीजन एक्सेप्टिंग द पॉइंट z इक्वल टू z नॉट। एक तरीके से तुम इस तरह के रीजन को भी एनुअल रीजन ही बोलोगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहां तक समझ में? यस सर। अब इस रीजन का मतलब क्या होता है? इस रीजन का मतलब ये होता है कि यू आर एट पॉइंट z इक्वल टू -3। यू जस्ट ट्राई टू राइट इन दिस फैशन, z माइनस ऑफ -3 का मॉड। ये कह रहा है लेस देन 2, मतलब क्या हुआ? You are referring about all those complex numbers whose distance from -3 is less than 2. You're talking of all those complex numbers whose distance from -3 is, sorry, from ये 0 पे नहीं कट के करके जाएगा, because 0 मतलब रेडियस पे 3 ही हो जाएगा। तो you are talking of all those complex numbers
whose distance from -3 is less than 2. Okay? Then also in the very same line, you are saying that fine, but z cannot be equal to -3. So I'm saying I will remove this particular. So in other sense, you are in an annular region, isn't it? So you are in an annular region here also. But if you try to write a series expansion, a Laurent series expansion in this region, that is z plus 3 ka mod less than 2 and z plus 3 ka mod greater than 0, you are actually writing a Laurent series about z equal to -3, about z equal to -3. Here in this case, now Laurent series will give you an idea about the nature of the singularities. Otherwise, writing it for any annular region will not give you the idea of nature of singularities. But certainly in exam also, and otherwise also questions may be asked for other annular regions as well. So I hope I'm able to explain the entire thing. Yes, sir. अल्पना समझ में आया? हाँ भैया, तो मेरे को पक्का? एक चीज समझ में नहीं आई। हाँ हाँ, स्टार्टिंग में ना जैसे आप वो पूरी उसको टर्म को यू से रिप्लेस कर रहे हो, वो जरूरी थोड़ी है क्या वो, मतलब क्योंकि एक्चुअली जब मैंने भी स्टार्टिंग में सॉल्व किया था तो मेरा सेम ही हुआ था, एसेंशियल सिंगुलैरिटी ही आई थी। एंड और मैंने वो z के टर्म्स में किया था, मतलब इज इट नेसेसरी ये करो, मतलब ऐसे ही पूछूं कि नहीं, I'm also मैं asking, then how would you do? If it is not the case, how would you do? मतलब अगर you नहीं लिखूं, then what to do? नहीं लिखा तो मैंने डायरेक्ट, जैसे इस वाले टर्म से भी, पिछले वाले टर्म से भी आई टुक z कॉमन, तो वो 1 + 3/z हो गया वो। तो प्रॉब्लम तो एसेंशियल सिंगुलैरिटी वाली ही हुई आगे जाके, वो तो ठीक है, पर मतलब जस्ट आस्किंग, मतलब नहीं, वो तो सही बात है, वही मैं कह रहा हूँ। अगर मान लेते तुम यहाँ पे z कॉमन ले लेते, let's say if you take a z common out from here, the problem is that it would yield you 1 + 3/z. So it will yield you 3/z का mod less than 1. So it will yield you mod z greater than 3. ठीक, देखो ये नेबरहुड नहीं होती। नेबरहुड का मतलब क्या होता है? इफ आई एम सेइंग अबाउट, मतलब मैं आई एम टॉकिंग अबाउट नेबरहुड। इफ आई एम सेइंग फाइंड मी अ लॉरेंट सीरीज अबाउट z इक्वल टू z नॉट, अबाउट का मतलब क्या होता है मैथ्स में? यू आर इन नेबरहुड ऑफ z इक्वल टू z नॉट। इस तरह के रीजन को तुम नेबरहुड नहीं कहोगे, ग्रेटर देन रीजन को नेबरहुड नहीं कहोगे। जो सुबह हमारा डिस्कशन चल रहा था, एनुअल रीजन कहोगे, हाँ एनुअल रीजन कह सकते हो। मॉड z ग्रेटर देन 3 को तुम एनुअल रीजन तो जरूर कह सकते हो, बट मॉड z ग्रेटर देन 3 को तुम एक नेबरहुड नहीं, नेबरहुड के लिए यू नीड अ डिस्क which encloses all those points. So let's say अगर मेरे को z equal to 0 की neighborhood define करनी है, I would write mod z less than 3. I would not write mod z greater than 3. This is not a neighborhood of z equal to 0. I hope I'm able to make some sense. कोई दिक्कत आ रही है क्या इसमें? भरत समझ में, भरत समझ में आ रहा सर है तो ऊपर से? इसमें, सर जो भी अल्पना ने पूछा उसमें आप z कॉमन लेने के बजाय 3 कॉमन ले लीजिए, तो विल बी इन द नेबरहुड, नो? एक मिनट, अब तुम कह रहे हो कि लेट्स से 1/1 + z इनटू क्या कह रहे हो 3 + z, और आप कह रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ दिस आई टेक this way, is it? यस सर। Okay. So now, okay. I have no issues about it. लेकिन मेरी बात समझने की कोशिश करो. If at all I take this way, then what is the problem? Problem is my function will come out in some powers of 1/z. Okay. राइट सर। मतलब मेरा Laurent series would contain some powers in 1/z, and which says that z equal to 0 would be a singularity. But z equal to 0 singularity है ही कहाँ? You will not be able to But assess. that, देखो, in order to assess singularity, you have to expand about z equal to -3. मतलब तुम्हें z + 3 को पिक्चर में रहना पड़ेगा, सेंटर में. You should have terms in z + 3. यस सर, इसलिए यू लेना पड़ेगा। इसलिए u लेना पड़ेगा. और सर इसीलिए वो डाउट क्रिएट हो रहा था क्योंकि बीच में अब आपने ना मॉड z लेस देन 3 वो वाले हाँ केसेस हाँ, भी ले लिए थे, राइट राइट. इसलिए वो मतलब वो अराउंड z और अराउंड द सिंगुलर वही पॉइंट। तो स्टार्टिंग में कंडीशन दे देते तो शायद ये प्रॉब्लम आती नहीं, आई गेस।